Hello, Assalamualaikum guys, this is me Basit and today I'm back with another banger tutorial. And आज की वीडियो में we are going to be breaking down a scene from Iman Gadzhi's latest video, जो कि ये पजल वाला सीन है। और to be honest, ये वाला सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ओवरऑल इस वीडियो में सारे ही फैक्ट्स ऑलमोस्ट अच्छे लगे मुझे, बट दिस वन वाज आई थॉट लेट्स रिक्रिएट दिस वन। एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर आप लोगों ने चाहा तो मैं और भी सीन्स को ब्रेक डाउन करूँगा, बट फॉर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेकिंग डाउन दिस पजल सीन that you are watching in your screen right now. So आज की वीडियो में we are going to be breaking down this. So yeah, let's start the tutorial and start recreating this scene. So guys, इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहले हमारा स्टेप है वो है इस पजल को ड्रॉ करना। So guys, the first thing we need to do to create this animation, this puzzle animation of Iman Gadzhi's video. So guys, सबसे पहले इस पजल एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले तो ऐसे दो पजल्स चाहिए होंगे। वैसे तो आप इसको लाइक गूगल से पिक कर सकते हो, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री पिक गूगल या कोई सी वेबसाइट से पजल्स को डाउनलोड कर सकते हो। बट मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की तो मुझे एक्जैक्टली सिमिलर नहीं मिले, बट आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग सिमिलर. I'm going to be drawing this myself, and then I will be animating them. So if you want, you can skip this part and move forward to the other part of the video where I'm going to be showing you how to animate them and do the final stuff. So yeah, if you want to know how I draw this, how to draw this, then watch this part. So yeah, let's start it. So सबसे पहले तो I'm going to be selecting zooming in like this, and now I'm going to draw this. I've already taken a screenshot from this video जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. So what I'm going to be doing is simply start drawing this by taking the pen tool here and start drawing this shape like that. So I'm going to be starting from here like that, and now let's draw. हम ज़्यादा इसको नहीं जाएंगे, fill को मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ for example, and we'll only keep the stroke, and let's start drawing again. And yep, start like this, and we will try to make this as close as possible like that. So guys, finally हमने शेप तो ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, एज यू कैन सी. लेट मी इंक्रीज इट्स स्ट्रोक साइज. सो एज यू कैन सी हमने ऑलमोस्ट सिमिलर शेप यहाँ पे क्रिएट कर ली है. एंड लेट मी टर्न ऑन द फिल हेयर एज वेल. यहाँ पे मैं इसकी फिल भी ऐड कर लेता हूँ. सिंपली यहाँ पे आएंगे कंटेंट में, एंड वी विल ऐड अ फिल हेयर लाइक दैट. एंड नाउ आई विल change the color to the actual color, like it was slightly black like that. And now we have the shape here. And let me quickly do this with the stroke as well. उसकी मैं थोड़ा सा gradient like stroke था, like gradient yellow plus slightly black shade. Let me check it. Yellow plus slightly let's keep it radial, make it slightly dark yellow like that, and see if we get a similar shape. So I guess yeah, we got a similar shape as well for this. अच्छा, black नहीं है हमारे पास, we have the white slightly, so we will add a light yellow plus a dark yellow. That looks better. And let's add slightly dark tone if we can get a similar look. Overall हमारा similar look तो आ चुका है. Then there's slight blur as well. So you do that if you can. तो हम इसको ज़्यादा मैच करने पे नहीं जाते. देयर इज़ अ वाइट एंड येलो येलोइश लुक है हमारे पास थोड़ा सा ना, तो वी विल कीप इट दैट. एंड ये वाला येलो हमारा काफ़ी, इसको हम यहाँ पे डार्क करते हैं, एंड देन वी विल मेक दिस स्लाइटली लाइटर, एंड आई गेस दैट लुक्स बेटर. सो ये वाली शेप हमारी डन हो गई है. एंड नाउ टू क्रिएट दिस शेप, सबसे पहले इसका हम स्ट्रोक साइज भी अराउंड 2% कर देते हैं, around 2%. Oh shit, what's happening? And that looks perfect, I guess. And नहीं, let's do what if we do this and this. So I guess that's better. So अब हम इसको जो है यहाँ पे शेप के ऊपर रख देंगे, and then we will duplicate this, and simply we will मैं इसको अपसाइड हम मूव कर लेंगे अपसाइड डाउन, ताकि ये वाली शेप बन जाए. सिंपली उसको करने के लिए क्या करना है आपने, सिंपली इसको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है इस पे आके, एंड देन ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, एंड देन वी विल फ्लिप इट हॉरिजॉन्टली. लेट मी क्विकली फर्स्ट इन सबका जो है एंकर पॉइंट सेंटर में कर लेता हूँ लाइक दैट. Do the same with this one as well. And now let's click here and move this to vertical
लाइक दैट। हमारी ये वाली शेप भी ऑलमोस्ट क्लियर क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, ये वाली थोड़ी सी आई गेस डिफरेंट है ईमान की, बट फॉर नाउ वी विल गो विद दिस वन, द वन दैट वी हैव ड्रॉ, बस उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सो लेट्स वी विल रोटेट इट लेटर। सो इसके साथ हम इसमें जाएंगे एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग इज सिंपली, तो शेप हमारी दोनों यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग इज सिंपली एनिमेटिंग देम। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट एनिमेटिंग इट। एंड फर्स्ट हम जो है इसके अंदर जैसे कि पर्सनल ब्रांड था उसके एक्सेल उसमें वीडियो में सीन में, तो हम यहाँ पे पर्सनल ब्रांड का एक आइकन प्लस टेक्स्ट ले लेते हैं। तो सबसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, स्केल द साइज अ बिट एंड प्लेस इट हियर, रिड्यूस द साइज एक्चुअली। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले लेंगे एंड इट्स ऑल कैप्स। तो हम ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं धर्मा, जो कि मैंने रिसेंटली ही यूज़ किया था। सो लेट्स पिक दिस वन, इंक्रीज द साइज ऑफ इट लाइक दैट एंड वी विल place it here and now move both of them to here, and now we will take a icon, so let's go with this one एंड यप एंड वी विल अलाइन देम प्रॉपर्ली। इसको भी हम ग्रेडियंट ऐड करके जो है ना इसका जो वो है अपना चेंज कर देते हैं। एंड हम यहाँ से ग्रेडियंट ऐड नहीं करते, वी विल ऐड इट फ्रॉम हेयर, क्योंकि वो वाला ग्रेडियंट जो है वो हमारा मूव होता रहता है। तो वी विल ऐड अ ग्रेडियंट ओवरले फ्रॉम हेयर एंड देन वी विल चेंज द कलर टू येलो एंड वाइट, स्लाइटली light yellow like that. I guess that's perfect. And now what we are going to be doing is simply um, let's align them again. That's perfect. Now हमारा ये सीन डन हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी एनिमेटिंग ऑल ऑफ देम। सो उसको करने के लिए सिंपली सबसे पहले हम इस शेप के अंदर जो है ना, सबसे पहले इन दोनों को हम वो कर लेते हैं प्रोकॉम, इस टेक्स्ट को हमारे और साथ ही हमारे जो है आइकन को जो हमारा अंदर है, एंड देन वी विल सिंपली ट्रैक मैट दिस टू द शेप लेयर हेयर। अब जैसे हम ये करेंगे हमारी शेप लेयर जो है वो गायब हो जाएगी, सिंपली उसको एबल करना है। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अब हम जब भी इन आइकन्स को मूव करेंगे ना, एज यू कैन सी हेयर मूव करेंगे तो शेप के अंदर ही रहेंगे, तो हमारा ऐसा लगेगा जैसे शेप के अंदर से निकल कर आ रहा है। तो वाई आई डिड दिस, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा लुक आए, शेप के अंदर से ही आ रहे हैं। नाउ मैं जो इन दोनों पे पोजीशन और ओपेसिटी की फ्रेम ले लूँगा लाइक दैट, एंड सिंपली एक ही वाले की फ्रेम को आगे मूव करूँगा एंड देन मूव इट डाउन and decrease its opacity like that, and I guess that's perfect. Simply इसको मैं ease in करूँगा and then we will create this graph, give this graph। अभी हमारा काफ़ी नीचे से आ रहा है, I guess वो हमें थोड़ा सा ऊपर करना है like that, simply increase it like that। and वैसे भी कि हमारा की फ्रेम जो है बाद में होंगे जब हमारी ये एनिमेशन हो रही होगी like that। and now what we are going to be doing is simply uh, इन दोनों पजल्स को हम यहाँ पे एनिमेट करेंगे। टू डू दैट सबसे पहले हम जो है सिंपली इस वाले को जो है हम इसके साथ लिंक कर लेते हैं। अच्छा, ट्रैक मैट करने के लिए जो है हमें ये वाला स्नेल आइकन को यूज़ करते हैं, और इसको पेरेंट और लिंक करने के लिए ये वाले स्नेल आइकन को यूज़ करते हैं। तो अब मैं इसको करूँगा सिंपली, और इससे जो है इसको जो है लिंक कर लूँगा ताकि हमारी शेप के साथ साथ ये भी मूव हो, एज यू कैन सी हेयर। Now let's start our animation process. So let me quickly scale them down a bit like that, like this, and I will move this here. And plus, what I'm going to be doing is simply slightly reduce the size. Same, do the same with this one, like that, and slightly reduce the size. The same as first one, like that. And now we will give them position keyframes plus rotation keyframe, like this. And let's open both of them, like that, and move them here actually. And then we will start moving them. First I will move this one like that, and do the same with this one like that, and let's see हमारी एनिमेशन कैसी हो रही है। तो रोटेशन की फ्रेम एज वेल, इस वाले को हम यूँ करेंगे, इस तरफ मैं -10 की तरफ करेंगे, एंड दिस वन को भी हम जो है -10 की तरफ कर मूव करेंगे, एंड इसको हम नीचे की तरफ मूव करेंगे लाइक दैट। एंड नाउ जैसे ही हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी हम दोनों इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे, एंड देन वी विल मूव इट, then we will get into the graph and give this graph like that। इन दोनों को थोड़ा सा हम क्लोज मूव करेंगे like this, and also we will take a scale keyframe as well, ताकि इनका size भी थोड़ा सा बड़ा हो। Do the same with this one, add a scale property as well, and we will increase the size to around 80 for this and for this too, and move this one closer
like that. Perfect. अच्छा, हमारी जो पर्सनल ब्रांड की एनिमेशन है वो बाद में आएगी, तो वी आर गोइंग टू बी मूविंग दिस हियर एंड देन ये वाला जो हमारा है वो अगेन इसका जो साइज बढ़ेगा वो इस तरफ मूव होगा. सो हाउ वी कैन डू दैट? Simply add a null object here and pair this shape to the null object like this. And how now we will add a scale property, position property, and rotate as well. And we will scale it up like this, move it here, and we'll slightly scale it up here, move it here, slightly इसको rotate भी करेंगे. Or maybe don't rotate this like that and move it here. And we will again give this the keyframe and animate these keyframes like this, like that. अच्छा, इसका भी हम साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसका हम ज़्यादा रखेंगे like that, like that. And then there's a puzzle animation. Perfect. Or maybe let's move the scale keyframe ahead like here. ज़्यादा दूर हो गया. Not going to do this. इसमें जहाँ पे है ना हमारा स्केल keyframe, हम यहाँ से जो है इसका भी keyframe दे देंगे like that. अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे. And when we will get this look, इसको जो है हमारा almost similar look आ चुका है. Not exactly the same, but yeah, similar. We broke down how it worked. Perfect. And now what we are going to be doing is adding the final stuff. So final stuff add करने के लिए simply first of all we will add a background. Let's go with this one for now. Import this here. Make it slightly like that. I guess that looks better. Scale इसका size बढ़ा कर लूँगा मैं. Opacity और कम करूँगा to around 5 to 6%. अच्छा, अब नाउ तो उसकी एनिमेशन में यहाँ पे जो है जब एनिमेशन स्टार्ट होती है तो स्लाइटली ब्लैकिश सा लुक होता है, और उसी के साथ साथ जो है अपना देन जैसे ही ये वाला पजल ऊपर आता है देन इस पे जो है सारा फोकस आ जाता है, स्पॉटलाइट टाइप का इफेक्ट है. तो वी विल क्रिएट दैट. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट ले लूँगा एंड देन वी विल ऐड अ विंगनेट इफेक्ट हियर लाइक दैट. मैं इसकी वो है अपना क्या कहते हैं अमाउंट वो बढ़ा लूँगा एंड देन इसका जो वो है की फ्रेम तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा लाइक दैट हेयर. एंड थोड़ा सा इसको कम करेंगे एंड एंगल ऑफ हम ज़्यादा करेंगे. इसकी अगेन कैपेसिटी को कम करेंगे हम लाइक दैट. एंड देन जैसे ही हमारा ये वाला पजल विजिबल होगा वी आर गोइंग टू बी मूविंग दिस एनिमेटिंग दिस एंगल ऑफ व्यू एंड देन अमाउंट. सबसे पहले यहाँ पे ऐसे था एंड देन आई एम गोइंग टू बी मूविंग दिस हेयर एक्चुअली दिस. हम इन तीन पे की फ्रेम ले लेंगे एंड देन जैसे ही हमारा वो स्टार्ट होगी एनिमेशन हमें इस पे फोकस लाना है. सो वी विल मूव दिस सेंटर पॉइंट हेयर like here. Yeah, यहाँ पे हमारा anchor point है. We'll move it here and increase the amount like that. You can see here like the perfect. Close angle of view बढ़ाएंगे and we'll decrease this slightly like that and amount को भी हम थोड़ा सा कम रखेंगे. Perfect. तो हमें slightly similar में look यहाँ पे मिल जाएगा and we will do this as you can see like that.
like that, like that. Spotlight जैसा effect हमारा आ चुका है. Now we'll add a glow to these shapes. Let me quickly drop a glow here. ये वाली पे ऐड करते हैं. We will decrease its intensity and see how it looks. That looks better. Yep. Slightly intensity को हम कम करेंगे यहाँ पे. Yeah, I guess that looks better. और थोड़ा सा थ्रेशोल्ड को कम करते हैं. So I guess that looks better. And now we will copy the same glow and paste it here like that. And if you will notice, उसके में थोड़ा सा यहाँ पे blur भी था edges पे. So how we can add a blur here as well. So simply उसके लिए, and I will take another adjustment layer like that. And now we'll add we can add a Gaussian blur or we can add a fast blur as well. Let me try a fast blur first and let's see if it works. This one. इसके blur radius को हम ज़्यादा करेंगे and iterations को. I guess let's go with the fast blur. So now जैसे हम blur add कर लेंगे, now we will create a marks here, जो कि हम यहाँ पे adjustment layer को select करेंगे and then we will come here and draw take a big circle and start drawing it here like that, not like that actually, like that, and we will draw it in the center again like that, and we can later move the shape upwards like that, and then we will simply यहाँ पे marks में आएंगे and we will invert the mask like that. And what we will be doing, simply feather को हम इसका increase कर देंगे like this, and we will move this down to the vignette से हम इसके नीचे move कर देंगे. We will increase the blur and increase the blur like that. Okay, so हमारा काफी ज़्यादा हो गया blur. We will make it 1, increase saturation, see, and we will change the mask here. We will increase its feather as well. So overall हमारा blur भी add हो चुका है and we have added the spotlight effect too. Now we are going to be adding some of the final adjustments as well. Like that looks perfect. So overall हमारा scene यहाँ पे breakdown हो चुका है and we can also add some final effects to this as well. तो कि हमारा noise हो जाता है. Let's add a noise here as well to get a look. Noise भी add कर देते हैं. We will add the noise in the last like that. 25 20% या 15% हम कहीं पे भी इसको यहाँ पे रख देंगे जहाँ पे हमें बेहतर लगेगा. And then we will take another adjustment layer and add a post-rise time to this, ताकि हम एक laggy टाइप का लुक दें. इसको 18 या 12 दोनों में से किसी पे भी हम रख देंगे. परफेक्ट. सो ओवरऑल हमने ये वाला सीन का भी ब्रेक डाउन कर लिया है. अच्छा, इस पे हम ऐड करेंगे मोशन ब्लर प्लस वी विल ऐड another final effect जो कि हमारा होगा CC lens, and we will see if CC lens make us difference here. And थोड़ा सा ऐड करके देख लेते हैं how it looks. आई गेस हल्का सा हमें सही लगेगा. तो गाइस फाइनली एज यू कैन सी हमारा सीन ब्रेक डाउन हो चुका है, हमने क्रिएट कर लिया है. आज के ट्यूटोरियल में हमने लाइक शेप ड्रॉ करना सीखा एंड वी लर्न हाउ टू लाइक क्रिएट सच एनिमेशंस. एंड या वैसे ये काफ़ी इजी एनिमेशन थी, नॉट दैट हार्ड अगर हमें पजल्स जो हम ड्रॉ यहाँ पे नहीं करते. बट पजल ड्रॉ करने में हमें टाइम लग गया, सो दैट्स वाई इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. बट बाकी ये एनिमेशन काफ़ी ईजी थी. एज यू कैन सी this is how we can create this animation. Of course look similar nahi hai because we don't have the exact puzzles and the exact background, but still we managed to break it down like this. So yeah, agar aapko tutorial pasand aaya then make sure to give it a like and also subscribe to get more videos like this. I will meet you in the next video. Till then, take care, bye.